Namaskar. We shall discuss today on problem housing finance company. So, what is housing finance company? It is registered under the Companies Act 1956, engaged in the business of providing loans and finance for the housing purposes, whether directly or indirectly. Earlier, these companies are regulated by the National Housing Bank NHB, but now regulation is transferred to Reserve Bank of India in 2019 for the better surveillance or better monitoring. However, few of their regulatory powers are still with NHB. Means the housing finance companies are regulated by both the institution, that is NHB and the RBI. So one question may come into the debt recovery agents that housing finance company is regulated by either Reserve Bank of India or NHB or both. So answer is both. So now what is house problem housing finance company? It is when the company has refused or failed to meet within 5 working days any lawful demand for repayment of matured public डिपॉजिट्स। मान लीजिए आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में 1 लाख रुपए की एफडी करी और आपको जरूरत पड़ गई। अगर वो 5 दिन में आपकी पूरी नहीं होती है डिमांड, तो एक किस्म से वो फाइनेंस कंपनी प्रॉब्लम में है। Intimates the Company Law Board under Section 58AA of the Companies Act 1956 or the corresponding provisions of the Companies Act 2013 about its default to a small depositor in the payment of any public deposit or part thereof or any interest thereupon. यदि कंपनी खुद ही कंपनी लॉ बोर्ड को इन्फॉर्म करती है तो कि मैं एक स्मॉल डिपॉजिटर का पैसा नहीं दे पा रहा हूं, चाहे फुल अमाउंट है, पार्ट अमाउंट है या इंटरेस्ट अमाउंट है, तो भी वो कंपनी प्रॉब्लम में मानी जाएगी। यदि हमें सब पता है कि जैसे कोई भी कंपनी है उसको कुछ लिक्विड एसेट्स आरबीआई के पास रखनी पड़ती हैं, तो यदि वह आरबीआई से अपनी लिक्विड एसेट को विड्रॉल करने के लिए प्रार्थना करता है, अप्रोच करता है कि उसको अपने डिपॉजिट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है और वहां से विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाता है, तो भी वह प्रॉब्लम में है। Approaches the bank for any relief or relaxation or exemption from the provisions of these directions for avoiding default in meeting public deposit or other obligations। तो यदि उसको मान लीजिए 4% सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है या कोई और दूसरा प्रोविजन मेंटेन करना है और उन्हें रिलैक्सेशन चाहता है, एग्जम्पशन चाहता है, तो भी समझो वह प्रॉब्लम में है। और यदि एनएचबी ने या आरबीआई ने has been identified by the bank or the NHB to be a problem housing finance company either suo moto or based on the complaints from the depositors about non-payment of public deposits or on complaints from the company lenders about the non-payment of dues। तो यदि एनएचबी और आरबीआई suo moto लेता है कंप्लेंट के आधार पर, तो भी वह प्रॉब्लम फाइनेंस कंपनी डिक्लेयर हो जाएगी। सो दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉब्लम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसको हम हिंदी में भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि हिंदी भाषी लोगों के लिए रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।